हाय, आई एम अ शॉपकीपर। मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है एंड मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है जो मुझे बता पाए मुझे कब क्या खरीदना है, कब क्या बेचना है, जो मेरे सामान का ख्याल रख सके, मेरे पैसे बचा सके, एंड लास्ट वीक आए थे कुछ लोग कोई एआई बेचने, बट मैंने देखते ही मना कर दिया बिकॉज मेरे से फोन वोन नहीं चलता। इतनी मुश्किल से तो मैंने यूपीआई और क्यूआर सीखा है। अबे भाई, तो तू इन एआई वालों के पास गया क्यों था? अगर मैं तेरे को बताऊं कि एक क्यू आर है जिससे तेरी सारी प्रॉब्लम, कि मैं अपने इन्वेंटरी मैनेज कर सकता हूँ, मैं कुछ अपडेट कर सकता हूँ, मुझे पता चलता है कि यार मेरी गुड्स की एक्सपायरी होने वाली है भाई, मैं इसको खराब होने से बचा लूँ। अगर मैं तेरे को बताऊँ कि सिर्फ एक क्यू आर इस सबको मैनेज कर लेगा, वो भी तेरे व्हाट्सएप से, इमेजिन कर सकता है? ये देख। वाओ, क्यूआर कोड से? टेल मी मोर। यार, एक तो ये महीना शुरू होता नहीं है, इनके मैगी का 4000 पैकेट का स्टॉक आ जाता है। मैं अबे क्या करूं? अरे छोटू, एक सेकेंड। अरे आप परेशान ना हो, मुझे बताओ ये आपको क्या चाहिए। मैगी का डिटेल्स अपडेट करने में मदद करूं, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट और कुछ और इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो मैगी के मेरे पास हैं अभी 4000 पैकेट आए हैं स्टॉक में, और इसकी प्राइस है 20 रुपये, और जिस प्राइस पे मैंने ठीक है, इसको तो ख़रीदा आप था वो था 10 रुपये, और इसकी एक्सपायरी डेट है अराउंड एक महीने की, विच इज़ गोइंग टू बी 1 सितंबर 2025। सो ऐड कर दे यार छोटू, जल्दी कर दे। भैया ये लो डिटेल्स जो मुझे मिल गए हैं। नाम मैगी, क्वांटिटी 40। So हमारे छोटू एआई में इस क्यूआर कोड की इंपॉर्टेंस इज वेरी मच। ऑल यू कैन डू इज स्कैन दिस क्यूआर कोड and you've reached our website, which is a live updated website of the inventory that you update using the voice agent that Shubham just described. जैसे जैसे आप वहाँ अपडेट करोगे ये भी अपडेट होती रहती है। दिस इज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, ऑल दी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड। उसके बाद यू कैन सी दैट देयर आर ऑल दीज बटन्स। योर मेन फोकस शुड बी रन ऑल फंक्शंस। से रन ऑल फंक्शंस क्या करता है? ये एक छोटू का कॉल बटन है, छोटू एआई बटन है। व्हाट दिस डज इज, आपके ये बटन दबाते ही आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे अपडेट्स ऑन योर स्टॉक एंड योर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। अब हमारे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का यूएसपी ये है कि छोटू एआई के बाद आपका कोई प्रोडक्ट कभी एक्सपायर नहीं होगा। हाउ? जैसे ही आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, लेट्स से परसों एक्सपायर होने वाला है, कोई यूजुअल कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन एक डोनेशन ड्राइव, कोई बंदा जो भंडारा कर रहा है, जिसको आज कोई भंडारा करना है, कोई कैंप करना है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो परसों एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा। ही विल बी एन इंस्टेंट बायर एंड अ बल्क बायर, सो यू कैन सेल दोज प्रोडक्ट्स एट लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स, बट यू कैन मेक श्योर दैट you're never at loss. So if I click this button, you can see I'll show you a live feed of my WhatsApp from my phone. You can see that abhi it's 4:23 and it's last message was 4:23 and it's currently 4:26. We'll wait for Chhotu AI's message to our WhatsApp. Okay, so the first message is a test message. Then comes our first proper message, which is a low stock alert. It says that candles have only 3 pieces left and you bought it from Suresh. You bought it for 20 rupees and you sold 5 units. Uske baad there are 2 more low stock alerts depending on the products. Now comes our expiry alert. This tells us that candles also have an expiry date of August 15th, 2025 approaching. Date until expiry is 13 days and current stock is 3 units. To sell it out, it now also gives us links to Google Map locations of nearby NGOs or gurudwaras or mandirs that will buy that product from us. You can also see that it also provides us the phone number of those places so that we can easily sell our products. All these information are fetched by Google Places API, so it can be easily verified that they are completely true. So the interesting part was up till now, and now I'm going to be discussing about the amazing tech behind Chhotu AI. It's just Chhotu, and Chhotu is not Chhota. He's Chhota packet bada dhamaka, right? So here's the tech behind it. Make.com का flow काम कैसे कर रहा है, right? So first of all, when I click on run once, or if I activate this flow for deployment, this thing on WhatsApp will get active. So it will detect all the messages that I'm sending them, right? So this router actually detects between if it's a text message or an audio message. If it's an audio message, then it will go to HTTPS request for converting it into like a downloadable format, and the HTTP get this middle one actually downloads it in MP3 format, and that MP3 format is sent to Sargam API, and then Sargam API passes on to the transcribe in Hindi to OpenAI, and further on, if it's an update request, then it goes down. If it's an add row request, then it goes up, and after that is done,
everything is updated onto WhatsApp, and same is the flow for above if it's but it's in the form of text. So now sharing you guys the flow for above. Wait for new data, right? So as we can see, we have an Excel file as a database, so the shopkeeper doesn't actually need another database for himself, right? We can even host it and view it on Excel sheet, but for now, as you can see, it is very easily mutable. It is easy to go hands-on with, so we're using Excel right now. I'm gonna run the workflow, right? And it's gonna running the workflow, and I'm gonna actually paste something over here. Paste some data over here, function type at name, bottle seal, quantity, though. Like I can write in any language I want, right? So as you can see, it's making the, so as you can see, row added, name, bottle seal, and let's see the database over here. As you can see, it has successfully been added. So now I'm gonna run it for Sargam API if it works for voice messages, right? On your WhatsApp. So I'm gonna actually send the voice message. So मुझे एक रो ऐड करनी है यार. It's going to be the entry for name duster and expiry 6 अगस्त 2047 और the quantity मेरे को 16 and amounts of unit I've sold up till now is going to be 1 and market like okay the price that I've bought it for is 50 rupees and the MRP of it is 100 rupees, so make accordingly. And the distributor is Ramesh. I'm just setting it to it and let's see how this works, right? I've sent it over here and it's triggered there, and as you can see this thing, the HTTP over here, it took some time to go from here to here and it has like generated. I hope so it has. Yes, as you can see, right, this is the correct data. And okay, so it has even added the row. That's great. And on the winner, let's see the okay, duster has even been just dynamically added. Great. So our workflow is completely working with, you can basically put in any type of voice recording into it, right? The main idea behind having Excel as a database is that the person will be able to apply his own Excel formulas and carry out his calculations of his own profit and own loss. We'll automate it as well for him, but he can do it as well for him, right? And he will have his own database. That's a pretty good thing. So also I will show you guys a method in which you can actually get on a one-to-one call with your assistant, right? And that method is going to be Vapi. Vapi helps you get multilingual support. It has transcriber, the deepgram, which is a very good transcriber, and it can also use Google text to speech, which has 126 plus language support. So I am like gonna go to call integration and I'm gonna run once, run this, right? Now it's waiting for me to trigger a call, right? I'm gonna talk to my assistant and look how natural my conversation is going to be with him, right? नमस्ते. नमस्ते छोटू, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. आपको क्या चाहिए? सो यार मेरे को ना एक रो ऐड करनी थी एंड वो जो रो मेरे को ऐड करनी थी वो थी उसका नेम होगा पेप्सी, राइट? सो पेप्सी की पेप्सी करो. या नेम पेप्सी एंड क्वांटिटी उसकी अभी 16 है एंड उसका जो मैंने खरीदने का प्राइस है वो है 20 रुपये और बेचने का प्राइस है 30 रुपये, राइट? एंड मैंने कितने बेचे हैं, नंबर ऑफ सोल्ड आउट डन इज 10 एंड इसका जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है वो है पेप्सिको. सो इसकी एक्सपायरी डेट भी होगी. एक्सपायरी डेट होगी इसकी 2028 में, 2028 जनवरी 1. सो जस्ट मेक अ रो फॉर इट एंड आई एम गोना कट द कॉल, राइट? एंड yeah, as soon as I cut the call, it will get all the transcribing and it will add for me an entire row. So as you can see, row added, expiry 1 and quantity, everything has been added. You can even speak in your own local language like Punjabi, Marathi, any language, given that you have DeepGram, you have multi-language support, right? With DeepGram you have multi-language support. With text-to-speech Google you have multi-language support. It ensures inclusivity, right? And as you can see, Pepsi has also been added to a database. That's great.